Hey guys, what's up? This is Ketan from Seduce Mentors. Now, I am actually continuing this series of baby IIMs and ये series जो बच्चों ने baby IIMs convert करे उनके लिए तो benefit है ही है. But then those who are actually gunning for CAT 2021, guys ये अच्छा motivation है आपके लिए because you can understand कि यार कम percentile में भी आपको बहुत अच्छे colleges मिल सकते हैं if you really work hard towards it. So IIM Jammu, is it a rising star amongst all the baby IIMs? We're gonna check that out very quickly. So this is the 1921 का बैच का रिव्यू है. अगेन पहली बात, they have nailed it, no doubt about it. यार पहला ऐसा था कि जम्मू के रिव्यूज बड़े बेकार आते थे, राइट? तो people were skeptical, because of the geopolitical scenarios and all that stuff. So people were really skeptical earlier. But I think the management has put in a lot of efforts. Yeah, they are doing really good. अगर आप देखोगे इसका जो sort of जो पोर्टफोलियो है कंपनीज का, वो मोस्टली सेम ही रहेगा. बेबी आइम्स में वो सेम ही रहता है. यू विल सी द सेम कंपनीज लाइक टाटा हो गया, मित्तल हो गया, वेदांता हो गया, कोटक हो गया, आईसीआईसीआई, ये सब हर जगह जाते हैं, राइट? मारुति एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? अगेन ऑल दिस टॉप नॉच कंपनीज गो टू ब्लैकी आल्सो, टॉप नॉच बी स्कूल्स एंड बेबी आइम्स आल्सो. डोमेन्स में अगर हम बात करेंगे तो एनालिटिक्स, कंसल्टिंग, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, हर एक डोमेन में जॉब मिली है बच्चों को. इनका थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 94, सबसे बड़ा एडवांटेज, राइट? मैंने लास्ट टाइम संबलपुर का बनाया था, उनका 95 का इनटेक है. These guys are 94. Number of companies visited 121. This is a very good thing. This is a very good thing because you're having companies more than the students always help, guys, right? Total number of students participating 89. बाकी वालों ने entrepreneurship वगैरह के लिए गए होंगे. Total number of offers 104. Again, more than the number of students. Students with multiple offer, that's 15. So again, if you talk about round about तुम्हारा round about 15% बच्चा लोग are more than having multiple offers, more than one offer. अच्छा चलो इसकी बैच थोड़ा सा देख लेते हैं. पोर्टफोलियो 67% फ्रेशर्स है. डेफिनेटली मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप फ्रेशर हो तो IIM जम्मू कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू बिकॉज डेफिनेटली यार 67% बच्चा लोग यहाँ पे फ्रेशर्स है. तो देखने का नजरिया ये है कि चलो फ्रेशर्स है तो अच्छा होगा. बट अगेन वर्क एक्स वाले हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छा कर सकते हो अंदर अभी स्कूल में जाके. आगे चलेंगे, थोड़ा बहुत ब्रेकअप देख लेना, मतलब 19 मंथ्स का एवरेज वर्क एक्स उन्होंने बोला है. तो थोड़ा सा just have a look at it. We will move ahead with the important thing out here. Educational background के बारे में अगर हम बात करेंगे, again dominated by engineers, that's around about 79, and जो भी ऊपर का बचा है तुम्हारा 21% is non-engineer. But again यार they have done good job. CTC, okay, the most awaited slide, folks. Highest 32 lakhs. Great, right? 32 lakhs देखना पड़ेगा. I'm very sure डोमेस्टिक ही होगा. टॉप 10 परसेंटाइल बच्चा लोग, टॉप 10 परसेंटाइल बच्चा लोग का मतलब है ये परसेंटेज नहीं होता, ये जो टॉपर होता है, जो जीपीए पकड़ा जाता है वो बंदा बन जाता है. तो मान लो अगर यहाँ पे 4.33 आउट ऑफ लाइक जीपीए अगर इनका 4.33 है एंड इफ द टॉपर इज लाइक अराउंड अबाउट 3.8 3.9 तो वो बन गया 100% वाला बंदा. सो अकॉर्डिंगली ये लोग मैच करते हैं. तो टॉप 10 परसेंटाइल में अगर आप रहते हो भाई, आपकी 18 लाख की एवरेज पैकेज है. 25 परसेंटाइल में हो तो राउंड आउट 15 लाख की आपकी एवरेज पैकेज है. 50 परसेंटाइल में हो अगर आप, which is what यार, which is like round about 47-48 students in the college, यार 13 लाख का एवरेज पैकेज है. can you just not be in top 50 percentile? I mean come on, right? मेहनत करते हो तो इतना तो तुमको मिलना ही मिलने वाला है. मीडियन अगर हम देखेंगे राउंड अबाउट 10,000. अगेन अगर आप थोड़ा देखोगे ना, ये जो बेबी आइम्स वाले जो है, राइट, जो भी कॉलेजेस अगर मैं बात कर रहा हूँ बेबी आइम्स के बारे में, अगर आप देखोगे दे आर सॉर्ट ऑफ क्लोज टू IMI दिल्ली, जिम, केजे सोमया, इनका जो काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके साथ ये मैच करता है. बट एक ऑनेस्ट रिव्यू मेरा ये होगा कि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा ही रहेगा जिंदगी भर. मेरे ख्याल से बेबी आइम्स विल डू एन अमेजिंग जॉब इवेंचुअली, एंड दैट इज वेयर द IIM एज अ टैग, एज अ ब्रांड कम्स इनटू पिक्चर. तो ये जानना बहुत जरूरी है. अभी आप बोलोगे कि व्हाट, मैं ये कॉलेज छोड़ के कोई और कॉलेज करूंगा क्योंकि उसका एवरेज पैकेज 13 लाख है. एवरेज पैकेज नॉट नेसेसरली कि तुमको मिल ही जाएगा करके, राइट? तो you guys need to have a little bit understanding on that front. चलो आगे चलते हैं. Let's look at the another stats, whatever that we have. Moving ahead, what do we have? Sector wise offer, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब रिपोर्ट इतनी डिटेल्ड मैनर में होती है ना, उसका एनालिसिस करने में भी मजा आता है. Being a finance guy, I love data. Okay, now let's get started. Energy, 12 lakh is the package that they're talking about. I hope this is the no, they're talking about the हाईएस्ट मेरे ख्याल से. आईटी अगेन 9.5 है. लेट मी सी हाईएस्ट है कि एवरेज. आई थिंक दिस इज एवरेज बाय द वे. ओ या, सो दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन VFSI मैन. 14.14 lakhs is what they are talking about as an average. 12.35% बच्चे लोग यहाँ पे प्लेस हुआ है. कंसल्टिंग में भी जॉब है.
edtech maybe they're doing good. We know the companies, don't have to talk about it. Real estate, that's okay. Media, that's okay. Manufacturing is okay. IT सबसे ज़्यादा chunky because यार definitely तुम्हारे 79% बच्चे लोग engineers है, तो again 10 लाख की average है. But यार this is really surprising to me यार, इन्होंने BFSI में अच्छा खासा फोड़ा है. तो guys, you can look out for IIM Jammu. I think this is doing pretty good, yeah. All right, what do we have? Finance, that's a domain wise offer. तो फाइनेंस के बारे में अच्छा ये बात करें तो बीएफएसआई इन्होंने थोड़ा सा अलग से रखा होगा, फाइनेंस को थोड़ा सा अलग से लिया होगा. ठीक है, ऑपरेशंस बीएफएसआई में ऑपरेशंस भी आता है बिकॉज ऊपर ऑपरेशंस नहीं दिया इन लोगों ने, राइट. तो ठीक है, कंसल्टिंग स्ट्रैटेजी, आई थिंक ओवरऑल द कॉलेज लुक्स गुड मेरे ख्याल से. लेट्स लुक एट द पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज. आई थिंक द कंपनीज आर गुड मैन. यू हैव ऑल द टॉप नॉच ब्रांड्स कमिंग इन हियर. मेरे ख्याल से बैंक्स ज्यादा दिख रहा है इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर चला गया. ये 92.7 बिग एफएम वगैरह सब मीडिया वाला होगा. What do we have? Byju's again, edutech basically. What do we have? College Union again, that's going to be edutech. Okay, so overall it looks good, it's not that bad to be very honest. Looking at the Jammu kind of bouncing back and kind of keeping its stats intact. मेरे ख्याल से is one of the best B school guys. जम्मू का कट ऑफ क्या होगा यार, 90 से लेकर 95 परसेंटाइल. ओपन कैटेगरी के लिए मेरे ख्याल से क्या होगा, 90, 90, 92, 93 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाती है. इट्स नॉट दैट अ बिग डील मैन. कैट 2020 में 20-25%, 20% पेपर अगर सही कर लेते तो भी 90 परसेंटाइल बन जाता. यू गेटिंग माय पॉइंट. सो यू नीड टू हसल फॉर अ राइट रीजन, यू नीड टू हसल फॉर अ राइट कॉलेज. But again, IIM Jammu, I'm pretty happy with the reviews. I'm pretty happy with the kind of statistics that they have actually put in. So guys, if you are getting into IIM Jammu, don't regret. It's a good B school. अंदर जाके फोड़ना है. तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि भाई अंदर जाके टॉप 10 परसेंटाइल. I don't want to get into 25, 50 percentile. It's going to be just top 10 percentile. And you will have a great package. You will have an amazing package, which is close to top notch B schools in the country. So guys, I hope आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा. यार दो चीजें कर देना. I give you quality content on a daily basis. Make it a point that कि आप like करो मेरा वीडियो, because वो like देखने से मुझे मोटिवेशन आता है कि चलो यार बच्चे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं. नहीं तो वो थोड़ा सा आपके एंड पे रूड भी लगता है कि यार वीडियो देख लिया लाइक भी नहीं कर लिया, तो थोड़ा सा बनता है एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स. Would love to cater to a lot of people in the country, man. So yeah, help me to kind of grow on YouTube. And also before you move it, hit that bell icon and the subscribe button. Guys, that's it from my side. Tomorrow we'll come up with another B school, probably सिरमौर के बारे में हम देखेंगे. एंड एंड में मैं एक फाइनल वीडियो बना दूंगा आपको बी स्कूल का कंपैरिजन का, BBIMs का. गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.